All right. So thank you, Smiley, for listening very carefully the CRM module, first module. Now we are going to second module, that is delivery part, right? So generally we sign the contract with the client, then we start working with the client. What client do? A client share the requirement to us. So we will go with the second module, that is the complete delivery module. So we will create the requirement on the system, and then of course we will assign the requirement to recruiters, and they will start sourcing. They will do the pipeline with that particular requirement. We will manage the feedbacks of the pipelines. Then we will go through the interview management, offer management, how we do fee share. Then once candidate join, how we manage our placement and billing. So the And placement, billing, and invoicing would be managed by individuals or finance team. no, till placement, once we do the placement, so once we do the placement, when candidate join, then we do the placement, right? Right, right. And once we do the placement, finance notify automatically through the system that today this candidate Candidate has been joined, joined, right. and you have to raise the invoice. So obviously finance will raise the And then invoice, invoicing would be taken care by them. taken care by the, Okay. right? So that module we will go. Yeah. And the requirement creation, matlab, is it necessary that manager has to create it, or individuals can do that? Individuals can also do that. Let's say I have got the position, I have assigned it to someone. Okay. So Do I need to create the position for them, or this is something you are just telling me to but the thing is ki, whoever the account manager should create the requirement and assign the to recruiter, but some account manager do the forward the email to रिक्रूटर की, कर देना? ये लोग काम कर लो इस रिक्वायरमेंट पे, क्रिएट कर देना, हमको अकाउंट मैनेजर बना देना और अपने आप को रिक्रूटर असाइन करके स्टार्ट वर्क. So it depends on practice how you are managing. So I can't take call on this. Right. All right. So let's move practically how we will do it. Huh? All right. So now moving practically. So this is Salesforce and lead and account part. Now coming to requirement part. Right. So how we can create the requirement? So we have option to create the requirement from account tab also. So example, I'm just going to take one training purpose client. I have just created it Acha. For training purpose only. So example, this is your client and you wanted to create the requirement with this client, right? Okay. Till now it's clear. So whatever work you will do with this client, all those information will come under the related team. So by opening the client, you can access entire information about the client under through the related tab. When you click on the related, you will have the address. You need to put the address as well. When then only finance will able to read the invoice. Then requirement is there. If It's bank है. I'll give you an example. Hmm. Multiple GSTs. Hmm. Profile wise they have GSTs. तो मेरे को multiple address देने पड़ेंगे. Exactly. GST number and address देने Address, पड़ेंगे. exactly. So when you click on the address button, you have this option. न्यू पुट द कंप्लीट क्लाइंट नेम. जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, बट इसका लीगल नेम जो है यू नीड टू पुट द लीगल नेम. जैसे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, यहाँ पे जो भी उनके एज पर जीएसटी लीगल नेम है, यू नीड टू पुट दैट. whether it is billing address or shipping address, you need to put that. You need to put the complete address here, GST number, and a state. You need to select कि which state, वो billing state क्या है. तो ये हाँ, स्टेट कोड ऑटोमेटिकली है. हाँ, बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस. तो बिलिंग इज दिस एंड एक और एड्रेस आपको अगर सेम है तो यू कैन क्रिएट इट एंड क्लोन इट, और वहां पे खाली चेंज कर दो आप शिपिंग यू विल एबल टू. तो एड्रेस आपको डालना है, वो प्राइसिंग के टाइम पे जरूरी है आपको यहाँ पे डालना. When you create the new requirement, you have option to create new requirement from here. अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा यू विल हैव द एक्सेस. जैसे एग्रीमेंट है वैसे अटैच किया हुआ होगा. इस क्लाइंट के साथ कितने रिक्वायरमेंट है, कितने पाइपलाइन है, आप यहाँ से भी इजिली. हाँ, मतलब एक जगह पे यू वुड हैव द इंटायर एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट अंडर रिलेटेड टैब.
यहाँ से रिपोर्ट्स पे यहाँ से कोई रिपोर्ट फिच नहीं हो सकता, बट यू वुड हैव दैट डाउनलोड करना नहीं, आई कैन हाँ हैव अ बेटर आइडिया, विजिबिलिटी कि एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली चल रहा है, कितने ऑफर्स कर रहे हैं हमने। एग्जैक्ट so you have option to create new requirement from here also. The benefit from here is कि जब आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करोगे तो क्लाइंट का नाम ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा यहाँ पे. You just need to select the client scope name from here and you can do so on. क्लाइंट स्कोप आई एम नॉट श्योर कौन है यहाँ पे बना हुआ. जनरली मैं डिलीट कर देता हूँ आफ्टर द ट्रेनिंग. है वरुण चक्रवर्ती करके एक स्कोप है यहाँ पे बना हुआ. सो लेट्स सी वी विल वर्क ऑन दिस रिक्वायरमेंट ओनली. दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे यू हैव द रिक्वायरमेंट टैब, सेपरेट रिक्वायरमेंट टैब एंड यू कैन मैनेज योर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दिस टैब, राइट. सो कमिंग टू दिस टैब रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे ओपन रिक्वायरमेंट का लिस्ट है. माई रिक्वायरमेंट ओपन, वट एवर रिक्वायरमेंट यू विल क्रिएट ऑल दोज रिक्वायरमेंट विल ओपन. Open requirement will be visible here. My requirement closed. So whenever you change the requirement status, all those requirement will come here. So that is your requirement created by you. And this is open requirement means overall company's requirement. This week requirement is overall company's requirement. कि कंपनी के इस वीक में क्या क्या रिक्वायरमेंट आया है. तो बेसिकली एवरीवन इज विजिबल कि यहाँ पे अभी 23 रिक्वायरमेंट आया है. दे कैन इजिली सी कि रिक्वायरमेंट कोड इज जनरेटेड बाय द सिस्टम व्हेन यू सेव द रिक्वायरमेंट. दिस इज द रिक्वायरमेंट टाइटल. क्लाइंट किस क्लाइंट से आया है, व्हेन दिस रिक्वायरमेंट पोस्टेड ऑन द सिस्टम. रिक्वायरमेंट का स्टेटस क्या है, ओपन क्लोज. अगर इस वीक आया है तो ऑब्वियसली सारे ओपन ही है. This is added from job board. Job board is nothing but when we create any requirement, we can post the requirement on company website. अगर वहां से कोई कैंडिडेट अप्लाई आता है तो दैट विल शो ओवर हियर. एडेड फ्रॉम जॉब बोर्ड पाइपलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली. हाँ हाँ, नो नो, यू कैन सेलेक्ट ये टोटल पाइपलाइन इस रिक्वायरमेंट पे कितने, एंड फर्दर इज द स्टेटस कि कितने एडेड हैं, कितने क्लाइंट के पास हैं, कितने इंटरव्यू के स्टेज पे हैं, कितने ऑफर स्टेज पे हैं, कितने प्लेस हो चुके हैं. तो यू वुड हैव द कंप्लीट आइडिया अबाउट द रिक्वायरमेंट थ्रू दिस पेज. ठीक है. नाउ कमिंग टू हाउ वी क्रिएट द न्यू रिक्वायरमेंट. अगेन फिल्टर बटन इज ऑलरेडी देयर ऑन द टॉप. आप कोई भी चीज से फिल्टर कर सकते हो रिक्वायरमेंट क्रिएटेड डेट से कि इस महीने कौन कौन से रिक्वायरमेंट आया है. इनफैक्ट अकाउंट मैनेजर से अपना नाम डालो कि हमारे कौन कौन से रिक्वायरमेंट. मल्टीपल फिल्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे आप कोई रिक्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो एंड यू वांटेड टू सी कि हमारे इस महीने कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, तो अकाउंट मैनेजर में अपना नाम डालिए और क्रिएटेड डेट और फ्रॉम में, तो आपके सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे. तो देर आर लॉट्स ऑफ फिल्टर देयर, राइट. यू कैन यूज दिस फिल्टर or एज ए I सर्च. can create my view also. You can create your view also. Now you have option to create new requirement over here. Just click on new requirement. यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले आपको क्लाइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि फॉर विच क्लाइंट यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस रिक्वायरमेंट. क्लाइंट वाले पेज से ऑटोमेटिकली पिक कर रहा था बिकॉज दैट इज एसोसिएटेड विद दैट, राइट. तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं. जैसे ट्रेनिंग श्वेता आ गया, जो रिसेंटली यूज्ड होता है वो टॉप में हमने सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पे हम क्लाइंट स्पोक पे जैसे जब कुछ टैप करोगे ना 2-3 लेटर तो आ जाएगा. यहाँ पे देखो वरुण चक्रवर्ती आ गया. अब नेक्स्ट टाइम जब यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वरुण चक्रवर्ती. यहाँ पे क्लिक करते ही नाउ यू नीड टू फिल रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन. जैसे ट्रेनिंग मैं डाल देता हूँ. ट्रेनिंग अकाउंट मैनेजर में आपको अपना नाम, एक बात मैं कह रहा था कि बाय डिफॉल्ट आप आपका आ जाएगा. अगर कोई रिक्रूटर पोस्ट कर रहा है तो यहाँ पे वो आपका नाम अकाउंट मैनेजर. सी अकाउंट मैनेजर का एक्सेस लेवल अलग होता है, रिक्रूटर का एक्सेस लेवल अलग होता है. अगर वो क्रिएट कर रहे हैं तो दे हैव टू पुट यू एज ए अकाउंट मैनेजर, अगर आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट पुट कर रहे हैं तो. अकाउंट मैनेजर ही रिक्वायरमेंट को बाद में मॉडिफाई कर सकता है, रिक्रूटर नहीं. दैट्स द थिंग. हम लोग का क्या था, हाई क्राफ्ट वीडियो जोका में भी वी हैव टू क्रिएट इट एंड वी कैन मॉडिफाई इट. अगर इन केस कुछ इशू आता तो वी हैव अनदर टीम, लाइक सेपरेट टीम है जो हमारे एटीएस एंड ये मैनेज करती थी. तो हम उनको रीच आउट करते थे एंड दे यूज्ड टू टेल अस कि कैसे करना है, हमारा डिटेल्स लेके क्रेडेंशियल्स लेके देन
वो करते थे, बट देन हाँ हम लोग कर सकते थे उसको। इनफैक्ट जो क्रिएटर है, पोजीशन क्रिएट कर रहा है, सिर्फ वही मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ पे अकाउंट मैनेजर कैन मॉडिफाई, तो क्रिएट तो कोई कर सकता है बट जो मॉडिफाई। मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो एरर आ जाएगा उनकी। वर्क लोकेशन, वी हैव टू पुट वर्क लोकेशन, आई एम जस्ट पुटिंग न्यू दिल्ली, ओके। यहाँ पे वी कैन इंडिकेट अबाउट दिस पोजीशन वेदर इट इज ड्राइव और डाइवर्सिटी। नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे हमें डालना है, कितने पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल 2, मल्टीपल भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट स्टेटस हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ओपन है तो ओपन अभी रखेंगे, बाद में अगर क्लोज होता है तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं एडिट करके। experience required by the client, that is suppose 3 to 3 to, आप बता दो। 3 to 10 years। priority you can define high, normal, low। network account manager is nothing but this system is using for vendors also, तो उनके लिए अलग हमने आईडी बना रखा है। So basically, this is the complete license module. So the fee of this license, this cost is high. बट जो वेंडर मॉड्यूल है तो उनको हमने नेटवर्क का एक अलग कस्टम कर रखा है, द फी ऑफ दैट लाइसेंस इज वेरी लेस, चीपर। तो उनका नाम इसमें आता है नेटवर्क अकाउंट मैनेजर में। अगर कोई एक वेंडर काम कर रहा है मतलब ये, या उसको मैनेज करने के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पे उसका नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, एल्स लेफ्ट इट ब्लैंक, राइट। ओके, रिक्रूटर, यहाँ पे आपके सारे रिक्रूटर का नाम आएगा। इफ यू आर वर्किंग सेल्फ ऑन दिस रिक्वायरमेंट यू शुड पुट योर नेम एज ए रिक्रूटर, राइट। इससे आ जाना चाहिए आपका नाम, आ गया। You just need to select it, you can choose multiple recruiters also from here। तो उसको क्या होगा, पोजीशन असाइन हो जाएगा एंड दे विल एबल टू, उनको एक मेल भी सिस्टम भेज देगा कि जॉब एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे देखिए पोस्ट टू करियर पोर्टल, ये बाय डिफॉल्ट चेक होता है। इफ यू डोंट वांटेड टू पोस्ट ऑन द करियर साइट ऑफ द वेबसाइट यू जस्ट अनचेक इट। अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो चेक ही रहेगा। When you, जब ये चेक रहेगा तो यहाँ पे वेबसाइट रिक्वायरमेंट टाइटल आपको अलग से डालना पड़ेगा। समटाइम क्या होता है कि हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे HCL कोई क्लाइंट है, नॉर्मली वो किसी और क्लाइंट के लिए भी हायरिंग करता है जहाँ पे रिक्रूट करता है वो इंजीनियर को, तो वहाँ पे हम नॉर्मली रिक्वायरमेंट टाइटल में क्लाइंट का नाम डाल देते हैं, जैसे HDFC टाइटल में ही डाल दिया कि इस क्लाइंट के लिए है। तो टू अवॉइड दिस, अगर इस नाम को यहाँ पे हमने इसी पर्पस के लिए यहाँ पे अलग से रिक्वायरमेंट टाइटल बनाया था कि यार अगर वेबसाइट पे कुछ और भी लिखना चाहते हो तो यू कैन पुट, तो यही वाला जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये यही वाला रिक्वायरमेंट टाइटल वेबसाइट पे दिखेगा। अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम ही डाल दो, ट्रेनिंग स्पाइनी, ठीक है। मास जॉब अप्लाई, मास जॉब अप्लाई क्या होता है, अभी मैं एक चेक कर देता हूँ तो आपको बताऊंगा बाद में, सेव करने के बाद इसका क्या फीचर है। काफी अच्छा फीचर है, यू कैन यूटिलाइज इट। नेटवर्क यूजर इज नथिंग बट, जैसे मैंने बताया था ना, नेटवर्क अकाउंट मैनेजर, अगर सब वेंडर्स हैं और रिक्रूटर काम कर रहे हैं तो उनके पास आईडीज अलग हैं, तो उनका नाम यहाँ से सिलेक्ट करके उनको असाइन कर सकते हो। जनरली हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग और एसोसिएट आते हैं, नए बच्चे जो होते हैं बिल्कुल कॉलेज पास आउट है या ट्रेनिंग काम करते हैं, तो उनका नाम यहाँ पे दिखेगा नेटवर्क यूजर में। अच्छा। तो उनको हमने वही वाला लाइसेंस दे रखा है। अच्छा, जो कम वाला है। हाँ, देवल टू सोर्स, देवल टू पाइपलाइन एंड देवल टू, तो उसमें ऑफर प्लेसमेंट मॉड्यूल नहीं होता है कि बिलिंग वगैरह डालने का ऑप्शन नहीं होता है, तो यू हैव टू मैनेज दैट। इंडस्ट्री यहाँ पे रिक्वायरमेंट का डालेंगे, फॉर एग्जांपल बैंकिंग। डिजायर्ड स्किल यहाँ पे बेसिकली वेबसाइट पे शो होता है, कैंडिडेट के लिए इजी होता है टू सर्च इट, वैसे ट्रेनिंग, HR, टैलेंट एक्विजिशन। मैं बाद में डिलीट कर दूंगा इसको। जॉब कैटेगरी यू कैन सिलेक्ट इट, ये बेसिकली नौकरी से उठाया हुआ सारे कैटेगरी जो यूज, जैसे HR रिक्रूट में। यहाँ पे यहाँ पे यू नीड टू कॉपी पेस्ट योर JD, राइट।
like इन केस में मेरे पास बहुत डिटेल जेडी नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू इज ये हम दो टू थ्री लाइनर्स आई कैन डू, और अगर वेबसाइट पे डालना है तो फॉर श्योर कोई पूरा जेडी चाहिए होगा। रेडी चाहिए होगा, और प्लस ये रिक्रूटर के लिए भी तो हेल्पफुल होता है ना। रिक्रूटर को तो अगर हमने डाउनलोड देंगे ओवर द वो कॉल। तो और तो वो अलग चीज है, लेकिन सिस्टम पे क्या होता है कि सिस्टम आज की डेट में बहुत अपग्रेडेशन में चल रहे हैं, एआई जा रहे हैं। तो एआई वगैरह कैसे, आप सिस्टम को इंफॉर्मेशन नहीं दोगे कि ये जेडी हम देख रहे हैं, तो एआई कैसे काम करेगा तो आगे चल के। अगर लेट से क्या दिया ही नहीं है, न्यू पोजीशन है, तो एटलीस्ट जो भी डाउनलोड आप रिक्रूटर को देना चाहते हो, यहाँ एटलीस्ट पे पुट डाल। दो अबाउट द वेबसाइट रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन भी हमने उसी पर्पस के लिए बनाया था। अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल है जेडी में एंड यू वांट नॉट वांटेड टू यूज ऑन द वेबसाइट, यू कैन रिमूव दोज वर्ड्स एंड जस्ट कॉपी पेस्ट द सिमिलर थिंग इफ यू आर पोस्टिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट। अगर सेम है तो यू कैन जस्ट डू कॉपी पेस्ट, राइट। फिर उसके नीचे बॉटम में बिलिंग इंफॉर्मेशन, मिनिमम सीटीसी मैक्सिमम सीटीसी हमें डालने हैं, विच क्लाइंट कैन ऑफर। वी पुट द सीटीसी इन लाख। इन लाख मीन्स हमें फिगर डालना है, जैसे अगर मान लीजिए 5 लाख दे रहा है तो जस्ट पुट 5। मैक्सिमम क्लाइंट कैन ऑफर 7, जस्ट पुट 7। एंड रेट यू नीड टू पुट द रेट, कि हम इसको किस रेट पे काम कराएंगे। क्लाइंट का जैसे हमने फिगर आउट कर लिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो पिक कर लिया उसने कॉन्ट्रैक्ट से, तो यहाँ ड्रॉप डाउन भी तो आ सकता है। जैसे हमारे वहां पे आता था। कि हर रिक्रूटर को नहीं पता होता आइडियली, तो हम लोग क्या करते थे, जोपा पे जाके भी एग्रीमेंट्स हमारे पास नहीं आते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एग्रीमेंट नहीं रीड करते हैं, आते नहीं है तो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, आई अंडरस्टूड सो वी कैन ड्रॉप डाउन हो जाता है, जो एग्रीमेंट में कॉमर्शियल्स है ना वो अपने आप देखिए, पिक कर लेता है हर एक क्लाइंट। चीज का कुछ लूप होल होता है। हमने इस सिस्टम को किसी और सिस्टम से माइग्रेट करा है, वहां पे कुछ थे नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये चीज डाल देता, इनेबल कर देता, इट कैन बी डूएबल। बट बहुत सारे में कॉन्टेक्ट डालते ही नहीं। तो व्हाट इन दैट केस व्हाट यू विल, यू हैव टू पुट मैनुअली। यू कैन रेफर द कॉन्टेक्ट, यू आर वर्किंग एज ए अकाउंट मैनेजर, तो आपको तो पता ही होगा। बट दैट्स अ गुड पॉइंट, वी कैन थिंक अबाउट इट। हाँ, क्योंकि हम लोग का तो क्या था ना, ये फाइनेंस टीम क्रिएट करती थी क्लाइंट। हम वी कैन नेवर क्रिएट अ क्लाइंट। क्लाइंट हैज टू बी क्रिएटेड बाय फाइनेंस टीम। एट द एंड एग्रीमेंट अप्रूव होके जाएगा फाइनेंस के पास। फाइनेंस हैज टू डू दिस। फाइनेंस अपडेट करती थी, तो बिल रेट आना ही चाहिए। कॉमर्शियल्स जो भी डिस्कस हुए हैं दैट हैज टू बी अपडेटेड एंड अकॉर्डिंगली हम बिल कर पाते थे, तो इजी हो जाता है। अगर बाय चांस बाय मिस्टेक किसी ने 8.33 की जगह 8.3 डाल दिया, तो भी लॉस है उसमें। सो दैट्स व्हाई इट गोज स्टैंडर्ड। हाँ, नहीं, ये हमारा लास्ट में चेक पॉइंट बनता है कि जब इनवॉइस रेज होता है, तो इनवॉइस रेज एट ए टाइम ऑफ रेजिंग द इनवॉइस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर, रेट शुड बी प्रॉपर मेंशन। तो मॉडिफाई वो फाइनेंस बाद में कर लेती ऑफर के टाइम पे हम एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं। है। And below that there is the com means clarity on mandate. So it is good to have those. These are not mandatory field, but you should fill the information if you have, and finally you will able to save this Save this. record. When you save it, it will open like this. Now when you go on the requirement section, this requirement will appear. Now it is showing under the this week requirement list. ये descending to ascending हो रखा है। Now you can see the very first one is showing this. When you switch on my requirement open, it will appear over here also. Now everything is showing 0000, 0000. So now you understood about this. Now, if you have to open the requirement, modify anything, you have the edit button. Any point of time, you can open this requirement by clicking on this requirement title. Now I am going to show you the feature which I checked master of apply. So when you click on the requirement or open it, so I clicked on mass job apply, right? Just a second. Hmm. I think this feature is
Not sure. So basically, we got a link over here where through that link any candidate can apply directly on the requirement. You can share that link to the any of your social media ki we have opening on this anyone interested you can apply through this link. To that link you can that is the shareable link of this particular requirement and they can apply directly for this requirement. Okay. So वो WhatsApp पेज हम ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं तो that becomes easy. एग्जैक्टली मैं एक बार चेक करता हूँ. It was working. I don't know why this link is not giving. Okay. I need to recheck on this. I can also check ना Now you can see I have checked on post to career portal. So this job will also live on our career page. This is our website wowjobs.biz. Uh, current openings. Current opening. Now it will redirect to portal. Now you can see this job is live on there. And if any candidate wanted to apply here, they will simply click there. They can see the information. We have very less job JD given. I mean, good communication skill. That's why it is very less visual. They can directly apply from there, and they can create or sign up हाँ वो तो उनको है. their account, right? And once they sign up, they will ever create it. So how it works now? This job is live. This job is live. Your recruiter to whom so ever you assign this requirement, they will able to access this and they will start working. Any question till now? No. You have option to post this job on LinkedIn also directly. You can post it on the LinkedIn from here. Just click on post in LinkedIn. So my LinkedIn is already linked to it? Or? No. You need to sign in first. There is option. Click on sign in with LinkedIn. It will redirect you to LinkedIn. Just click on sign in. Once you sign in on the LinkedIn, I don't know LinkedIn sign क्यों नहीं हो रहा. LinkedIn के पेज में प्रॉब्लम है एक्चुअली. LinkedIn के पेज में डायरेक्टली LinkedIn का है खुला हुआ. उनके एंड से कोई प्रॉब्लम होगा. So once we sign in on LinkedIn, click on get a basic information. System will capture this app will capture the basic information and because this is not signed in it, that is why this is giving a and click on share post on LinkedIn. That's it. There are three steps. First sign in, click on get basic information and click on share post on LinkedIn. So it will get posted on the LinkedIn. But and the candidates will be able to apply. Apply through the link. There will be link there. वो mass job apply वाला link, similar link. Exactly. And I'll be able to check the on this only. इस app पे मेरे पास आ जाएगा. Exactly. So a details है यहाँ पे जॉब कंसोल बनता है ऑन ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट. यहाँ पे पाइपलाइन जो भी न्यू पाइपलाइन होंगे यहाँ पे आ जाएंगे. पाइपलाइन वाई में आ जाएगा एडिट फ्रॉम जॉब बोर्ड. अगर कोई लिंक्डइन से अप्लाई आएगा या वेबसाइट से आएगा. अगर किसी रिक्रूटर ने पाइपलाइन करा हुआ तो उसका नाम आएगा यहाँ पे. फिर यहाँ पे ये विल मूव द कैंडिडेट और यहाँ से चलता है. Now I'm just going to source one candidate from the job portal and I'll show you how we parse, how we send it to client and how we manage the stages, right? So I'm just quickly going to search one candidate from Naukri. Let's take search resume.
I'm just going to log in from the available one. So do we have this mass mail यहाँ पे भी? हाँ, भी तो है. डेली कोटा होता है या कैसे होता है? डेली कोटा नहीं होता, वीकली कोटा भी तो है. यहाँ पे कोई ऑलरेडी सर्च से मैं सर्च कर रहा हूँ, and I'll just download one of the resume to show you how we parse and how it works. Like Sachin Bispute is the resume. I'm just going to download it. I've downloaded it. Right. So example, you have shortlisted this candidate. Candidate is interested, right? Now, how we do sourcing, how we do the rest of the process over here. So you have parse option. You need to go on candidate tab, and obviously you have a new candidate option also as well, and resume parser. Sometime if resume is in JPG or picture format, so parser will not capture the information. PDF or Word? PDF, Word, and any format apart from the image format, any format can capture by the parser. You just click on the resume parser to parse the resume. Click on the choose file. As example, I just downloaded. It can be pipelined directly from here. You just need to put the job code JB or something like that. You need to put here. If you don't remember, just let it be. Click on update existing candidate. So if that particular candidate is already in the database, that will get updated. And click on parse resume. So system will take hardly 10 to 15 seconds of time and your resume will get parsed. Now you can see our profile parsed successfully. This candidate has been created. This is the link you can directly open from here. This candidate will open on the Salesforce. Now you can see the information captured by the system name, mobile number, email ID, year of experience, current company. Everything has been captured. Work details. So everything, almost things has been captured by the system. You can verify it if you wanted case, any information captured wrongly, you can modify it. That could be modified, right? And since we have node pipeline at the time of parsing, you need to do the pipeline with the requirement for which you have sourced. So you have a button called add to requirement. Very simple button. Click on add to requirement. Search your requirement over here. Click on the magnifying glass. You will able to see all your requirements. Example, this is the requirement assigned to you. Just select it and click on convert. That's it. So what happens? So pipeline it tag हो गया, candidate create हो गया, and it's added under the pipeline. And as an account manager, you will also get notified about the pipeline, right? Over the email. अभी नंदनी का आईडी डाला हुआ, वो सारे नोटिफिकेशन उसके ऊपर जा रहे हैं. पागल हो रही होगी बैठ के. Okay, तो on खाली account manager. So now when you open the requirement, you can see the job console. Job console is nothing but the pipeline history, entire pipeline history of that particular requirement. Here you can see this candidate Sachin, which footage got pipeline and currently into added to pipeline stage. This is the basic stage, first stage, and pipeline by a smiley on this state. You have separate pipeline tab as well. You can click here and you can manage your pipeline from here. So now this is all pipeline, entire company's pipeline. And when you click on my pipeline, you will be able to see this is your pipeline. Right? You have the search button over here. You can use the search button as well. So this is number one thing how you can pipeline. Acha, I am just going to show you one good feature. For example, normally which position or which type of position you work? Can you tell me the requirement? Banking. Banking में title कोई बताओ आप? Wealth manager. Wealth manager. Suppose you got the requirement of wealth manager and you wanted to source कि चलो first level में हम database में देखते हैं whether we do have data. A good candidate on it. तो यहाँ पे pipeline में जाकर के you can simply do the search through the requirement title. Suppose you are looking for wealth manager and job location is Delhi. तो ये इंटरनल डेटाबेस सारा वो कर देगा कैंडिडेट का सर
एक चीज बताइए, जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग सर्च करेगा या कैंडिडेट के रेज्यूमे के अकॉर्डिंग सर्च करेगा? पोजीशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट टाइटल में हम सर्च डाल रहे हैं ना। वेल्थ मैनेजर पे प्रीवियसली कोई भी पाइपलाइन होगा तो पाइपलाइन आ जाएगी आपको। अच्छा, किसी भी तरह का वेल्थ हम्म, लिखा होगा उन्होंने तो वो हाँ, पाएगा। वेल्थ मैनेजर आ जाएगा। व्हेन यू सर्च हियर सिस्टम विल गिव यू द वेल्थ मैनेजर पाइपलाइन, नो पाइपलाइन। अच्छा, उसके बाद मास में भी कर सकते हैं मेल से? हाँ, नहीं, वेल्थ मैनेजर में दिल्ली में होना चाहिए। मैं लोकेशन नहीं डालता हूँ, मे बी न्यू दिल्ली हम लोग यूज करते होंगे। हाँ, वेल्थ आप डाल के देखिए खाली। वेल्थ मैनेजर ही डाल के देखता हूँ। Now you can see these are the pipeline of wealth manager. There are lots of pipeline there. तो जेड लेफ्ट क्यों आ रहा है? जेट लिफ्ट उस यूजर छोड़ के चली गई है, तो फॉर ईच अच्छा, वो लेफ्ट आता है। जेट लिफ्ट, that is pipeline by that particular user. There is no concern on this about that. तो आपको अगर मास मेल करना है, हमने यहाँ पे ऑल का बटन नहीं क्लिक करा है, इनेबल करा है, बिकॉज पीपल विल डू बिना देखे सुने। तो यू शुड गो, यू कैन, कैंडिडेट पर। हाँ, सिलेक्ट जिस भी कैंडिडेट को करना है शॉर्ट लिस्टेड सेंड टू क्लाइंट, यू कैन सिलेक्ट ऑल दोज एंड क्लिक ऑन मास मेल टू पाइपलाइन। So you can send your JD and send the interest mail ki whether they are interested or not. तो at least first level of sourcing you can do it. और ये ऐसा नहीं है कि दो लोगों को सिलेक्ट करा तो दो लोगों का ईमेल आईडी दिखेगा उसको, नहीं, इंडिविजुअली। जैसे नौकरी से हाँ, ज्यादा वैसे। हाँ, वैसे यहाँ पे आप ड्राफ्ट करके अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो, यू कैन अटैच द डॉक्यूमेंट एज वेल। एंड जेडी अगर आपकी डॉक्यूमेंट में, यू कैन अटैच द जेडी एंड फाइनली यू कैन सेंड ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, यू कैन सेंड इट। So that is one level of sourcing. You can do it from here. Another level of sourcing is advanced CV search is also there. Advanced CV search में you can put the key skills like wealth management just eliminated by वो comma. एंटायर रेज्यूमे में यही वाला पूछ रही थी कि वो Entire, एंटायर रेज्यूमे में कहीं लिखा होगा तो आ हाँ, जाए। हाँ, यहाँ से you can search it and suppose wealth management and you are looking for New Delhi, and you can search it. तो सिस्टम क्या करेगा, रिज्यूमे में सर्च करके आपको ये डेटा दे देगा, देखो ये सारे वेल्थ मैनेजर के कैंडिडेट हैं। इस केस में आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो इन वन गो, एंड यू कैन सेंड देम ईमेल। यहाँ पे ड्राफ्ट करो आप और सबसे बॉटम में यू विल हैव द ऑप्शन टू सेंड ईमेल, यहाँ पे सेंड मेल। क्लियर? So this way you can do the database sourcing. Okay, now go it quickly. Requirement is open by you. You are the account manager. Somebody has done the pipeline. So how you will manage? So as an account manager, what you will do? You will go through this pipeline. You will search the go through the candidate CV. If you find this is suitable to share with client, so you will share it with the client. If you find this is not suitable, so you can reject it at your own level. हेलो। हेलो। हाँ जी। So as an account manager, what action you will do? You will take. So you can reject at your own level. So you have option. You can see this is the something where through which we manage our stages. So the first option is you can change the stage. So from pipeline you can put account manager rejected. On hold you can take put. Send to command. So this is we are not using. As an account manager you can take this action or Send to client. send to client. So for send to client button, you will use this button. Sometimes we require to post this resume. Sometimes client is having their own database, so sometimes we put the resume on their system. So in that case, you can select this send to client wala thing, this part. Else, if you else we are sharing the resume through the ATS only. अच्छा, एटीएस के थ्रू मेल भेजते हैं? हाँ जी। ओके। तो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑल्सो, अभी तो एक सिंगल पाइपलाइन है तो दैट्स व्हाई। तो फिर तो मेल्स का ज्यादा यूज होता ही नहीं होगा, सारा काम एटीएस के थ्रू ही रीड हुई। यस,
तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन वी सिलेक्ट सबमिट टू क्लाइंट बुक, क्लिक हेयर एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बीसीसी आपका आ जाएगा, ताकि एक कॉपी आपके पास भी चला जाए इनबॉक्स में। टू में जो रिक्वायरमेंट पे जो कांटेक्ट था उनका आ गया। यहाँ पे आप इसको जो भी आपको लिखना है, यू नीड टू पुट हेयर, राइट, and in the bottom you can see the resume has been attached, candidate resume you can see, you can Number view of the files uploaded zero. sometimes we require to attach additional tracker, external tracker in Excel. So in that case, you can select number of files. I mean, if you wanted to attach one file, so click one. So you will have one browse option there. System will give you one browse option. You can choose the file. Okay. If you send want candidate tracker से भी click कर send सकते हैं। candidate tracker is something, it is automatically tracker created by the system. अच्छा वो उससे better है तो हम हाँ, manually तो create करते हैं। if you create manually, so you can attach additional tracker. I'm just going to show you how candidate system create the tracker. When you check here, send candidate tracker, what will go with the resume? I'm just going back. Again, I'm just closing this window. I don't want it to send anything else. So in that case, this is the tracker, resume assessment. So this will get attached. When you click here, so this is something, a standard attachment is there, and it will capture It through basically assessment sheet the है, this is not the pressure. exactly. So when you check there, this it will automatically go to the client. So some information are not filled here. You need to fill the information first, then only this will work properly. Clear? So once you share the resume, I'm just doing it manually. So through manually, client will not receive the resume. And when I click on update, so what happened? It will get updated and it will go to the next level. Now you can see the job console, your pipeline is empty, and now your candidate is showing under send to client. अच्छा यहीं से we can move it to the interview stage. Interview, exactly. From here, recruiter can need also to move into interview. वो calendar वाला option से Exactly, exactly. So calendar is the something to schedule the interview. You click here and schedule the interview. Mode of interview, whether it is person, telephonic, online, whatever. Interview date and time. Put the interview date and time and schedule it. So what happen? Your candidate will jump. अच्छा and will the candidate get the notification? Candidate के पास तो notification नहीं जाएगी ना? दो टाइम पे नोटिफिकेशन जाते हैं. आफ्टर इंटरव्यू, इफ कैंडिडेट सक्सेस इन इंटरव्यू, देन ये इंटरव्यू शेड्यूल का नहीं शेड्यूल जाता। का नहीं जाता. ऑफर के टाइम पे जब व्हेन यू क्रिएट द ऑफर, कांग्रेचुलेशन विल गो टू कैंडिडेट ऑटोमेटिकली. सो दिस इज समथिंग. हाँ, रिजेक्शन पे टाइम पे भी जाता है. व्हेन यू रिजेक्ट द कैंडिडेट इन इंटरव्यू स्टेज, देन इट विल गो ऑटोमेटिकली. Okay, and if we don't want to send that mail? नो, दिस इज डिफॉल्ट, इट विल गो डिफॉल्ट. अच्छा हम चाहे नहीं चाहने वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, we have to send this mail. यस. Now coming to offer stage, how we do roll out the offer. Obviously, we can manage the interview stage from here. Like if Selected. selected, rejected, round two, final round. So we Got can it. manage the stage. This is the sub stage. Basically, the first option is sub stage, and this is to move forward. So this stage, to this stage, we can roll out the offer for this candidate. Click on convert to offer. Put the stage offer given. Offer accepted. Billing type, you need to select billing type, fixed or variable. This is for overseas and variable. Generally, if we do any billing out of India, then we will select this. So when we select overseas, fixed or variable, so suppose variable, then we need to put the CTC offered. We need to select the currency कि किस करेंसी में हमारी बिलिंग है. जैसे सपोज यूएसडी में, अभी यूएसडी में हमें यूएसडी का रेट दे दिया. मैंने सिलेक्ट किया आज के डेट पे 81 के रेट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो सीटीसी हम लोग यहाँ यूएसडी में ही डालेंगे. जैसे 3000 यूएसडी पे है, 3000 टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे और यहाँ पे रेट डाल देंगे सपोज 10%. तो यूएसडी में सब कुछ कैलकुलेट करके आपका दे देगा. ठीक है.
अगर यहाँ पे हम इंडिया में फिक्स करते हैं तो यहाँ पे फिक्स्ड इंडिया है, और यहाँ पे इंडिया का INR में डालना है, इसमें कोई करेंसी वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट पुट सपोज 3 लाख, तो जस्ट पुट 3 लाख एंड पुट द रेट, and when you convert it, it will get converted. So currently I'm not going to convert it. हाँ, क्योंकि कैंडिडेट विल गेट Candidate will get the information. Okay, all right. So coming to this tab, main tab. So after pipeline, you will do the activity. You can do directly from here as well. बट So when you open it, I'm just going to show you. This is the pipeline ID generated by the system. And suppose you wanted to arrange the interview, you can do it from here as well. Schedule interview. ठीक है. So when you schedule the interview, candidate will come under the interview tab. Interview. You have a separate interview tab. And from here also you can do the convert to offer. अच्छा. So there are two way to do it. Here is from here you can also do the particular candidate into offer. When you put the offer, offer will be here, and obviously your billing amount and all. This is all offer. Offer is something restricted. From offer onwards, the data is restricted. Offer will show only your offer, अच्छा. your requirement related offer. अच्छा, वहां से सबका डेटा हटा दिया. हाँ, ऐसा क्यों? offer is not visible. Others offer is not visible to you. ऐसा क्यों? Just for the security, or you can say we have multiple departments and all, so Okay. that's the management call. But you will able to see your offers and your related offer, whatever offer you have or on your requirement. So to show you, I'm just going to log out from your window. Now I'm just logging through my ID, and I'm just going to show you the offer thing. Now when you click on offer, so your offer will show like this. Say example, this is all offers. This is something old offers when we migrated the system. I'm just going to show you the fresh offer. Say example, this is the offer, right? And uh, I'm just going to open one of the offer. This is the offer ID generated by the system. When you click here, you will able to, obviously when you convert it, it will show like this. The billing amount and all, which whatever you captured will display here, right? Tentative date of joining and everything. And this is the fee sharing. When you open it, you would have the fee share. You have to create the fee share. So example, in this case, there are two people sharing the amount. Sonali must be the BD Khushbu is the person. Sonali is the BD person and Khushbu is the recruiter. So amount is going to split here, and same this amount will reflect on related reports कि आपके पास इतने और there it will calculate, right? So we create the fee sharing by clicking on new button, and here you need to put the username, select the username. Say example, a smiley. Say example, your share is going to 15%, and obviously we select the revenue center. Basically, that is your department. Team, suppose team WGS. This department, this amount is going under. Might be inter department also, so we can generate the report through department wise also. So you can put your department. So revenue is going under your department. You need to select your reporting manager. So example, you are reporting to Savita. So reporting manager data can also come. Okay. Based on that कि इनके अंदर इनके टीम बिलिंग कितने हैं, who is the reporting manager. So based on that we can generate the That you can fetch, but we can't. you can also fetch. हम भी सविता की डिटेल्स निकाल सकते हैं. नहीं नहीं वही तो कह रही हूँ, सविता की तो आप ही फेच कर पाओगे ना. आपसे रिलेटेड जितने भी बिलिंग होगी आप निकाल सकते हो हाँ, वो सविता. मेरे से निकाल सकती हूँ, बट मतलब आपके हिस्से का निकाल सकते हो सविता का बिलिंग जो भी आपके थ्रू है. हाँ, वो बाकी ओवरऑल और बाकी सविता की टीम का पूरा का नहीं पूरा का निकाल नहीं निकाल सकते हो. एग्जैक्टली. वही चीज. तो यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट वी कैलकुलेट द फी शेयर, राइट? एंड फाइनली व्हेन कैंडिडेट ज्वाइन इन द कंपनी, so we create the placement. So placement is again you can create from the offer tab also. यहाँ पे convert to placement is the button. Click on convert वो to ज्वाइंट placement. स्टेटस आ जाएगा. हाँ, वो placement में move हो जाएगा. And here you have to fill few information. Fill, for example, Tejinder Singh.
When you convert into placement, you need to put few information like due date. Due date would be there. Here you need to fill the due date. कि when invoice will गो be टू due. डिटेल्स। हाँ, तो अच्छा, वो टाइम हमें एग्रीमेंट के टाइम पता चलता है, इन अ मंथ्स टाइम और स्टैंडर्ड है it या depends on client to client and based on agreement कि candidate ज्वाइन के बाद इनवॉइस रेज होने के बाद कितने दिन पहले, कितना टाइम? तो you would पेमेंट have टर्म idea होता है कि बेसिकली। this is the due date. हाँ, payment term. Based on payment term we will put the due date and finance will raise the invoice. They will put the invoice number and all, and finally they will raise the invoice. So that's something we follow from pipeline, sourcing pipeline till Everything is placement. ATS, right? Is Ah, Rapid Operation. everything is on it, yes. So, any question till placement? कोई भी नहीं। So till now, I have covered two module. That is the second module.